Hello students, Davinder this side. Welcome back to my channel. We will learn the poem The Road Not Taken, written by Robert Frost. This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply, but there is a deep meaning behind his poems. This is very beautiful and symbolic poem. Here we take the example of roads. Roads are symbolized with choices. Suddenly two roads come in front of you. What will you do? Obviously, you have to choose one. And when you choose one track, and you think about other track कि मैं दूसरा रास्ता लेता या ट्रैक लेता तो क्या होता. ऑफ कोर्स इट हैपन्स इन अवर रियल लाइफ. हमारी रियल लाइफ में भी ऐसी ही सिचुएशंस आती हैं कि आपको टू चॉइसेस में से आपको एक बेस्ट चूज करनी होती हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल you have to choose one best of two schools or universities, and if you select one best then you think about another choice कि अगर वो यूनिवर्सिटी या स्कूल में एडमिशन लिया होता या उसमें चूज़ किया होता तो क्या होता. सिमिलरली ये वो रोड है जो आपने चूज़ ही नहीं करी और आप उसके बारे में सोचते हो कि अगर वो चूज़ की होती तो ये हो जाता या वो हो जाता. और यू कैन से कि मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स होते, यहाँ पे इवेंट्स होते. सो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस तो होते ही हैं. सो लाइफ में भी हमारी चॉइसेस होती हैं एंड वी हैव टू चूज वन एंड हैव टू लीव वन. देयर आर 4 stanzas in this poem. The traveler finds himself in a wood. Wood means jungle, where two roads leads in different directions. The poet faces the problem of choosing one of them. In beginning of this poem, the poet is failing to decide which road is worth using. Let's start the first paragraph of the poem. Two roads diverged in a yellow wood. It means the poet finds himself in a wood. Wood means jungle, and he is standing in front of two roads. And two roads are diverged. Diverged means separated in different path. In a yellow wood. Yellow wood refers to autumn season. In this season, the color of leaves gets yellow. And sorry, I could not travel both, and be one traveler long I stood. The poet was sad, and he was alone, and single traveler, and he could not travel on both roads. Obviously, you also cannot travel on both if you choose the road. You will have to choose one best, alright? And the poet stood for a long time and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. The poet was looking one road as far as he could to where it bent in the undergrowth. It means poet की जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक उस रोड को देख रहा था और वो रोड जहाँ पे प्लांट्स एंड बुशेस थे वहाँ पे वो रोड बेंड हो जाती थी. बेंड मीन्स टर्न हो जाती थी. ओके, here roads are symbolized with choices. Robert Frost is talking about our real life. These situations come in our real life. You have to choose one and leave one. Now in second paragraph of this poem, then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. In this paragraph, poet has chosen one track and then took the other just as fair. Means वो रास्ता जो है वो उतना ही ब्यूटीफुल था जितना कि पहले वाला. फेयर मीन्स ब्यूटीफुल, जस्ट मीन्स जस्टिफाइड और इक्वली ब्यूटीफुल, एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम. इट मीन्स पोएट सेज that
शायद, परहैप्स मीन्स शायद मैंने अच्छा डिसीजन लिया है। यहाँ पे पोएट भी 100% श्योर नहीं है कि जो दो रास्ते हैं उनमें से जो एक रास्ता चूज किया है वो पहले के कंपैरिजन में बेटर है या नहीं। सो देयर इज अ डाउट इन हिज माइंड। लेकिन पोएट को जो थोड़ा सा श्योरिटी है दूसरा रास्ता पहले वाले से बेटर है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड व्यू। इट मीन्स green grass was grown over the road and it was less traveled, or road had not been used. It means leaves were not crushed, though as for that the passing there had warned them really about the same. It means जो पोएट है वो उस जगह पे खड़ा हुआ था रोड के जहाँ पे दोनों रोड का यूज जो हुआ है वो इक्वली हुआ है। नाउ इन स्टेंजा थर्ड, and both that morning equally lay in leaves, no step had trod in black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Now, in this stanza, the poet says that both the paths were similar that morning. Both had leaves on them, and no one had stepped on them because the leaves were still in green color. Trodden black means crushed with feet. Oh, I kept the first for another day. He decided that he will travel on one path for the another day. Okay? He knew that one day one way leads on to another way. He knows that he could not go back on the choice that he had made. In fourth stanza, I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. In this stanza, the poet says in future with a sigh. Sigh means a long, deep, audible exhalation expressing sadness, relief. The poet says in future with a sigh, he will say, once upon a time, he had reached such a point in life that there were two options for him, and he chose to travel on the road which had been traveled upon by a lesser number of people, and that made all differences in his life. In this paragraph, poet says कि काफ़ी टाइम बाद जब एक गहरी सांस लेते हुए, एक डीप ब्रेथ लेते हुए जब लोगों को बताएगा पोएट कि एक फॉरेस्ट में दो रोड्स आई थी जो कि अलग अलग डायरेक्शन की ओर जाती थी, और पोएट ने उस रोड पर चलने के लिए चूज़ किया जिस पर कि लोगों ने कम चला था, यानी कि लेस ट्रैवल्ड थी वो रोड। और इन सब से पोएट में काफ़ी डिफरेंसेस आए। Let's see what type of the literary devices are used in this poem. First is alliteration. Alliteration means repetition of the same letters of word that closely connect each other. For example, wanted where, first for, ages and ages, telling this. These are the examples of alliteration. Next is consonance and assonance. What is consonance? Consonance is a figure of speech in which the same consonant sound repeats within a group of words. For example, traffic, figures, fourth, tough. These words, tough जो है, tough में जो GH है, that produces F sound. So, because of this sound, it is called consonant. अब ट्रैफिक है, ट्रैफिक में F sound produce हो रहा है, that is why it is called consonance. Next is assonance. Assonance is a figure of speech in which there is a vowel sound. Vowel is A-E-I-O-U, and when you speak the word that produces vowel sound.
For example, sigh, by, lay, day, way, leaves. These are the vowel sound. Sigh, I sound produces. By, I sound produces. Lay, A sound produces. Day, A sound produces. Way, A sound produces. Leaves, E sound produces. So another example is rise, I sound produces. High, I sound produces. In the bright sky, bright, I sound produces. Sky is also I sound produces. Time after time, heart to heart, hand in hand. Okay. Example of assonance you can find in fourth line of third stanza of this poem. Yet knowing how way leads on to way. And the device is tone. Tone of the poem is negative to positive. In this paragraph क्या है इस पोएम में, पहले तो नेगेटिव होता है, उसके बाद पॉजिटिव चेंजेस हो जाते हैं. एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम में हमेशा ही आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में नेगेटिविटी होती है, उसके बाद क्या होता है, वो जो फीलिंग्स होती हैं वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती हैं. एंड आई होप दैट यू हैव स्टडीड द पोएम. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक और पोएम है फायर एंड आइज. स्टार्टिंग में क्या है, इसमें नेगेटिविटी होती है पोएम में, एंड आफ्टर देन इसको पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सो टोन ऑफ द पोएम क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव. ही कॉल्स द वुड्स येलो. अब वुड को क्या किया है, येलो में किया हुआ है. एंड सॉरी ट्रॉडन, सॉरी भी बोला हुआ है. ऐसे से वर्ड्स यूज किए हुए हैं नेगेटिव वाले. ट्रॉडन ब्लैक, डाउट, डाउट शोज पोएट्स पेसिमिस्ट टोन, बट लास्ट लाइन शोज ऑप्टिमिस्ट. लास्ट लाइन में क्या शो किया हुआ है, ऑप्टिमिस्ट. ओके. नाउ राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए ए बी. ओके. इन दिस पोएम सिमली इज यूज्ड. कहाँ पे सिमली यूज हुई है, 6th line and 9th line of this poem. In 6th line, the poet wants to choose one road which looks fair and attractive like a thing. अब इन लाइनों में like यूज हुआ है. like means उसकी तरह सुंदर, उसकी तरह सुंदर. सो एज या like जहाँ पे हो तो वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमली. एंड अनदर फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर, metaphor. metaphor is a direct comparison between two things. direct comparison हो रहा है किस किस चीज़ों में. poet calls the wood yellow. wood को उन्होंने येलो बोला है, बट डायरेक्टली उसमें wood येलो बोल दिया है, येलो wood है, which represent the difficulties of path. अब wood येलो जो वर्ड है इसमें metaphor है. एंड सेकेंड, रोड इज यूज्ड एज metaphor. अब रोड भी metaphor है. किस तरह से, क्योंकि रोड को एक चॉइसेस के साथ कंपैरिजन किया हुआ है. जो लाइफ के साथ जो चॉइसेस होती हैं, लाइफ में जो चॉइसेस होती हैं उसको कंपेयर किया गया है रोड से. सो रोड इज यूज्ड एज अ मेटाफर. एंड अनदर एग्जांपल, ग्रासी. ग्रासी इज यूज्ड एज अ मेटाफर विच रिप्रेजेंट्स द अट्रैक्शन ऑफ दिस रोड. ओके, मतलब कि रोड अट्रैक्शन है उस रोड का, ग्रासी होने की वजह से ये कंपैरिजन किया हुआ है, अट्रैक्शन है. सो ग्रासी इज यूज्ड एज मेटाफर. सो नाउ this is the end of the poem. I hope you have understood. Keep learning. Thank you.